કેવું કરી રહ્યા છો શાંતિ એકદમ જકાઈ ગયા બોલ નહીં
राम राम परमिला बहन, राम राम। आज बहुत परेशान हो गई जुकाम से। जुकाम से सर्दी से बहुत परेशान हूँ।
गुड मॉर्निंग पंडित भैया। सर्दी से बहुत परेशान आज हो गई, बहुत तेज़ सर्दी लग गई है, इसलिए आवाज़ नहीं दे रही हूँ आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बने हो तो कमेंट कर दो, सपोर्ट कर दो। कमेंट करने का टाइम नहीं है, ऑन हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। सर्दी बहुत तेज़ लग गई है, काढ़ा ओढ़ा पी रही हूँ, लेकिन दवा लेना पड़ जाएगा। सपोर्ट कर दो। जब जाइएगा बता दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलने का मन आज नहीं कर रहा मेरे भाई, आज बोलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज सर्दी लग गई है। हो सकता है आज लाइव भी बहुत देर तक ना चले।
थैंक यू पूनम बहन, थैंक यू। बाय 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 पूनम बहन। आज सर्दी से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ सर्दी से। अचानक सर्दी लग गई, कुछ खाई पी भी नहीं ठंडी चीज़, पता नहीं कैसे।
थैंक यू रवि भैया, थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्मी बहन राम राम, राम राम भैया। सर्दी सर्दी हो गई है। राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? यही देखिए कैसी हो, क्या बताओ। इस पता नहीं कहाँ से कैसे सर्दी लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जा रहा हूँ बाल कटवाने। अच्छा अच्छा, जाइए कटवा लीजिए, जाइए। केवल चाय पी हूँ, चाय पी हूँ। अभी क्लिनिक खुलेगा तब जाऊँगी दवा लेने। क्लिनिक खुलेगा तब दवा लेने जाऊँगी। हाँ हाँ, दवा ले लो। हाँ, दवा लूँगी भैया, दवा लूँगी। अपना ध्यान, अरे कितना ध्यान रखते रखते तब भी परेशान हो जाती हूँ। इधर थोड़ा ठीक ठाक थी, तो बस सर्दी कल से लग गई। ना कुछ खाना ना पीना। वही बारिश हुआ परसों ना, तो अचानक मेरे गले में खराश हुआ, तो ध्यान नहीं दी, सोची कि ऐसे है, ठीक हो जाएगा। कल से सर्दी ज़्यादा लग गई, सर और बहुत दुख रहा है। तो यही अभी सोच रही हूँ थोड़ी देर क्या करूँ। डेटा मिलता है, सपोर्ट नहीं कर पाता। हाँ, रात में ना, अरे लोग बने थे, याद नहीं है। मैं पूरा फुल वॉच की कि सोचिए ऐड फुल वॉच हो जाए तब फिर कमेंट करो फुल वॉच करके आ रही हूँ। भैया इतना मतलब दर्द हो रहा था हाथों में, मन नहीं किया। पूरा एक ऐड फुल वॉच करके फिर चली आई। कमेंट नहीं की, कमेंट करने का मन ही नहीं कर रहा था। रात में मैं किसी का सपोर्ट नहीं की। अरे चाची थी यशआर चौधरी की, पटेल यशआर चौधरी की आईडी चल रही थी और बाकी लोग थे। हिम्मत नहीं हुआ कि हम कमेंट कर दें, फिर मैं चली आई। रात में नींद नहीं आ रही थी, इतना दर्द हो रहा था। मुंबई में था, वाईफाई लगा था, इसलिए यहाँ वहाँ कर देता था। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। अरे आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप नहीं आ पाते हो। देखिए कुछ कहीं दिल का रिश्ता होता है, हर जगह स्वार्थ से नहीं लोग जुड़ते हैं। मैं तो भैया देखिए हर जगह स्वार्थ से नहीं रहती, कुछ दिल का रिश्ता होना चाहिए। जब से घर आया है यहाँ दिक्कत होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे हम लोगों का प्यार ममता बना रहे जब तक रहे धरती पे। सही बात है लक्ष्मी में। हाँ भैया, मैं तो देखिए 2-3 लोग हो, मैं अपने सगा भाई से ज़्यादा मानती हूँ कि मेरे सगे भाई से ज़्यादा ये लोग भाई हैं। अगर कहीं कुछ आ पड़ेगा तो मेरा साथ बिल्कुल देंगे। हाँ हाँ, सत्ता भाभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरी चाची बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं भैया। हम लोग में पता नहीं चलता है कि हम लोग माँ बेटी हैं। एकदम खुलेआम सब लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं। देखिए इस समय जो वो सपोर्ट कर देती हैं, हाँ हाँ करती हैं, अरे हम जानते हैं। बस उन्हीं का चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस वही खुशी है। मैं तो रात में नहीं आ पाती, दिन में उनकी लाइव जो है लगा के रख देती हूँ। दिन में वो जानती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अकेले कुछ नहीं कर पाते। काहे नहीं, काहे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास। देखिए खून के रिश्ते ही नहीं हर चीज़ निभा पाते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो खून के रिश्ते से बढ़ के होते हैं। जैसे देखिए आप हो, अशोक भाई हैं,
अजय बाबू हैं, नरेंद्र भाई है। ये सब मुझे भाइयों पे गर्व है कि मेरे अगर मेरे ऊपर कुछ आनी आफत आएगा तो ये लोग खड़े रहेंगे, जरूर दिल से खड़े रहेंगे, बल से भी खड़े रहेंगे। ये सपोर्ट वपोर्ट जो होता है ना, ये सब स्वार्थ का होता है कि हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये स्वार्थ है। हम लोग डेली नहीं आ पाते, लेकिन कभी कभी आते हैं। बस प्रेम होना चाहिए, अंदर से प्रेम बना रहे बस। जाइए आप बाल कटवा लीजिए, बाय बाय करके चले जाइए। हाँ अच्छा अच्छा, ऐड आ रहा है। अच्छा, थैंक यू मेरे भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो सर और एकदम इतना फट रहा है, इतना दुख रहा है कि क्या बताएं। आज भोजन भी नहीं बना, भोजन भी नहीं बन रहा है, हिम्मत नहीं ले रहा है कि कुछ खाना बनाओ। अभी देखिए पतिदेव होटल से लाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय 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 बाय, जाइए बाल कटवा लीजिए, जाइए जाइए जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। अभी थोड़ी देर में लाइव भी बंद कर दूंगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। ठीक है, बाय 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 बाय, जाइए। थैंक यू चाची जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, प्रणाम। और बताइए क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसी हो? मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में कमेंट करूँगी। ठीक है, नहा लीजिए, नहा लीजिए, आप जाइए नहा लीजिए। थैंक यू पंडित भैया, थैंक यू थैंक यू। भाई सर्दी लग गई, क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वागत है, बहुत बहुत दिल से हार्दिक वंदन है लाइव में। और बताइए। थैंक यू पंडित भैया, थैंक यू। और राकेश भैया, चाय पानी नाश्ता हुआ आपका?
नाश्ता पानी हुआ? थैंक यू रेखा बहन, स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक बंधन अभिनंदन है। लाइव में लाइक जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक बढ़ाइए। 9:16 पर आई हूँ सिस्टर। ठीक है बहन, ठीक है, जितना टाइम हो उतना सपोर्ट कर दो। मैं तो बता के जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो सर्दी लगी है, आज जगी ही नहीं हूँ, पड़ी हूँ बिस्तर पे, दर्द हो रहा है। और राकेश भैया, हाल चाल बताओ बाबू। हरे राम हो। हाँ अभी जाऊंगी दवा लेने, अभी जाऊंगी। कल कल से स्टार्ट हुआ, परसों गले में खराश हुआ तो हम सोची ऐसे होगा, और परसों से यहाँ मौसम चेंज हुआ, बारिश हो रही थी तो कल ज़्यादा बढ़ गया। अभी क्लिनिक नहीं खुला होगा ना, अभी जब खुलेगा तब दवा लेने जाऊंगी। आज भोजन वोजन कुछ नहीं बना है, हिम्मत नहीं ले रहा है उठ के बना लो। इतना दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में, सर तो जैसे लग रहा फट रहा है। चाय पी हूँ, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा अंदर से, जैसे बुखार है ना, बुखार में कुछ खाने का मन नहीं करता। पति देव है, अपना होटल से खाना खा लेंगे, क्या करूँ। राकेश भैया कहाँ चले गए? बने हो तो कमेंट करो। थैंक यू। आपका गाना फुलवाज की थी, जो कजरी गीत आप डाली थी, फुलवाज किए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा था। याद तो नहीं है कजरी गीत आपका कौन सा गाना था, लेकिन जो आप डाली थी गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ हाँ, देखिए सखिया खड़ी रघुपन घाट पर, हाँ हाँ, मारी नजरिया ना, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। हम सोचे हम भी पहले बहन से पूछ ले तभी गाना गा के डालूंगी। क्या मैं गा के डाल सकती हूँ आपका गाना? रेखा बहन मेरी आवाज़ सुन रही हो तो बता दो। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना,
मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जाके इसको डालूं, तब सोची पहले बहन से पूछ लूँ। नहीं भैया, लोग आपत्ति कर देते हैं ना, पहले पूछ लो। डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तबीयत ठीक हो ना, तब फिर। अभी तो बिस्तर पे पड़ी हूँ। गला कहाँ चलेगा। ओ, सिरा उरा तो इतना फट रहा क्या होता है। मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बदल देना उसमें। हाँ हाँ, वो जान रही हूँ, उतना समझ रही हूँ कि बिना बदले कॉपीराइट आ जाएगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपका गाना अच्छा रहता है, पर व्यूज पता नहीं क्यों बहुत कम रहते हैं। आप पे भी, सब पे कम रहते हैं, सब पे कम रहते हैं। लेकिन थंबनेल अच्छा बना के लगाओ ना, थोड़ा थंबनेल अच्छा बना के लगाओ। वो मैं बता रही थी, देखिए मेरे मोबाइल में नीचे बीच में स्टिकर लगा है, यस, जहाँ डॉलर का निशान है, यस, दिख रहा होगा आपको। वहीं पर देखिए, इसे डब्बा जैसा बना है, डब्बे को टच करेंगे तो बहुत सारे स्टिकर आएंगे, बहुत सारे स्टिकर आ गए। अब यही स्टिकर लोग खरीद रहे हैं और जो है एक दूसरे को भेजते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं फ्री में। पता नहीं कैसे होता है, तो मेरा फ्री में एक लोग करवाए, पर हुआ नहीं, फ्री में हुआ नहीं। तो जैसे जिसको सुपर चैट की तरह है, थंबनेल नहीं लगाने आता, थंबनेल नहीं आता। अब हम कैसे आपको बताएं, नंबर होता तो हम आपको अरे हमारा गिलास गिर गया। नंबर होता तो हम आपको बहुत कुछ सिखा देते। एक पिक्सल आईडी है, मेरा तो नहीं हो रहा है। अरे वो किसी का नहीं हो रहा, पैसा मांग रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। हाँ, पैसा मांग रहा है। मेरे में एक लोग फ्री करवाए थे, तो कल 2 लोग के लाइव में भेजा, मतलब जैसे टच की कि भेज दो, लेकिन जा नहीं रहा, पैसा मांग रहा है। तो मैं बोली उनसे कि ये जो है नहीं जा रहा है, तो बोले ऐसे भेजिए, जाएगा। अब देखिए 2-4 दिन और ट्राई करूँगी, नहीं जाएगा तो 50 रुपये का ले लूँगी। तो जैसे सुपर चैट नहीं होता, उसी तरह आप हमारे पास भेजो, हम आपके पास भेजेंगे, उससे भी डॉलर बनता है, उससे भी डॉलर बनता है। घर में कोई बच्चा हो ना, तो एक पिक्सल जो है ऐप होता है, उसी को डाउनलोड करवा लीजिए और उसी से थंबनेल बनाइए। और एक कौन सा ऐप है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जी टी पी से आपको कुछ नहीं, केवल मुंह से बोलना पड़ेगा। जी डाउनलोड करवा लीजिए, जो बच्चे जानकार हो, पढ़े लिखे हों आपके घर में। जी ऐप है, उसको आप डाउनलोड करवा लो। उससे आप मुख से बोलना पड़ेगा, जैसे ठीक है लक्ष्मी बहन, मैं भी लूँगी। हाँ, ले लीजिएगा। और जो मैं बता रही हूँ थंबनेल बनाने के लिए, एक ऐप है जी बोलते हैं, जिस पर फ़ोन उसी से होता है। हाँ हाँ, जिस पे फ़ोन पे चलता है उसी पे होगा। जैसे पैसा देना होता है ना, तो पैसा देना होता है। मैं थंबनेल के लिए बोल रही हूँ, उसके लिए देख लेना। जैसे थंबनेल आपको नहीं लगाने आता, उसके लिए मैं बता रही हूँ। जीटीपी एक ऐप होती है, तो उसको आप घर में जो बच्चे जानकार हो, पढ़े लिखे हों, बेटा या बेटी, उससे डाउनलोड करवा लो। और आप उससे थंबनेल बनाएंगे, केवल मुंह से आपको बोलना पड़ेगा मुंह से बोलना पड़ेगा, प्लस का निशान रहेगा,
उसको टच करिए तो आपकी गैलरी में जितनी फ़ोटो होंगी वो आएगा, आप फ़ोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद माइक पे टच करना तो बोलने का ऑप्शन देगा नीचे, मतलब माइक पे टच करते आप बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। 16:9 का थंबनेल होता है, 16:9। थैंक यू, सुन रही हैं मेरी बात। 16:9 का थंबनेल बना दीजिए। और जो जो आपको थंबनेल में लिखना होगा वो सब पहले से लिख के रेडी कर देना। तो बोल देना कि यही यही चीज़ लिखना है, जैसे नाच का हरवा है, सोहर है, कजरी है, बाकी और गाने हैं। तो बहुत बढ़िया थंबनेल आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही थंबनेल लगा देना वीडियो पे, तब आपका गाना और अच्छा चलेगा। देखिए, सामने जो दिखता है वही बिकता है। मेरी बात शॉर्टकट में आप सुन लीजिए, सामने जो दिखता है वही बिकता है। तो जब सामने पोस्टर अच्छा रहेगा, जैसे जो लोग आपका चैनल खोले ना, ऐसे मोबाइल चला रहे हैं तो सामने आपका आ गया, तो जब थंबनेल रहेगा अच्छा सा देखने में तो आदमी सोचेगा अरे थंबनेल अच्छा है, गाना गारी गीत है, कजरी गीत है, सोहर गीत है, लाओ टच करें देखें कैसा गाती है, कौन सा गाना है। तो लोग सुनेंगे। आपका गाना अच्छा रहता है बहन, आपका गाना अच्छा रहता है। और एक माइक ले लो, फिर बताना मेरी बिटिया रानी रहेगी। तो अच्छा अच्छा, आपकी लाइव में आऊँगी ना तब बताऊँगी, तब बिटिया से बोल देना, सब सुनेगी, तब मैं बता दूँगी। सही बात है लक्ष्मी बहन, हाँ हाँ, वही चीज़, वही चीज़। आपका गला अच्छा चलता है, गाना अच्छा रहता है, लेकिन अब वही है थंबनेल नहीं है तो लोग नहीं देखते हैं। चलो ठीक है लक्ष्मी बहन, नहाने जा रहे हैं। ठीक, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो जाओ नहा लो। आज तो हम बाय 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 बाय। आऊँगी आपके लाइव में ना तब बता दूँगी, पर आपकी आवाज़ जो है बहुत धीमी आती है, सुनाई नहीं पड़ता। कूलर अगर मैं अपने घर चलाती हूँ तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा आप माइक में बोलिए, माइक लगा के तब बोलिए, आवाज़ बहुत स्लो रहती है। जब आदमी सुनेंगे नहीं तो बात आपकी तो आएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, हाँ। जाओ नहा लो, आज तो हम नहाएंगे नहीं, बुखार है, बुखार बहुत है, नहीं नहाऊंगी। शरीर वैसे अभी डिटॉल डाल के पानी उनी में पोंछ लूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी, और नहाऊंगी नहीं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम जी आए हैं, स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। लक्ष्मी जी राधे 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 मेरे भैया, राधे 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 राधे।
राम 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 राम। राम 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 राम।
Down, 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 down.
That makes complete sense, Dr. Tarun. So, something like this. The prebiotic is like a fertilizer to the gut, and probiotic is like a seed which we plant in the soil. Thank you. Okay, bye bye.